Okay, dear students, welcome to all of you. Today we will discuss about the SPI protocol. In the last class, we have discussed the RS-232 protocol. So, what is the introduction of the SPI communication? SPI is a common communication protocol used by many different devices like the some application are the SD card module, RFID card reader module, and 2.4 gigahertz wireless transmitter receiver. In all places, we use the SPI communication with microcontrollers. One unique benefit of SPI is the fact that data can be transferred without interruption. Data को हम without interruption के transmit कर सकते हैं. That is a major benefit. Any number of bit can be sent or received in a continuous stream. There is a no limitation कि 7, 8 bit हम कितनी bit transmit करेंगे. With the 12C and UART, data is sent in packet form में भेजा जाता है and limited in a specific number of bits. Start and stop conditions define the beginning and end of each packet, so data is interrupted during the transmission. In the other protocol, we are talking about the UART and it is in the 12C protocol. But it is beneficial. SPI, there is no need of such type of foundation or interrupt. So devices communicating via SPI are in a master slave relationship. जो डिवाइस होते हैं वो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप में होते हैं. मास्टर इज द कंट्रोलिंग डिवाइस. डेफिनेटली यूजुअली ये माइक्रो कंट्रोलर, जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर होगा वो मास्टर डिवाइस होगा और वो हमारा मेन कंट्रोलिंग डिवाइस भी होगा. Microprocessor, that is a controlling device, and while the slave takes instruction from the master, जो slave होगा वो master से instruction लेगा. The simplest configuration of SPI is a single master, single slave system. That is the simplest form of the SPI protocol. But one master can control more than one slave. ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हमारा दैट इज अ सिंगल एज ए मास्टर है और यहाँ पर हमारा केवल एक ही स्लेब लाइक वी आर यूजिंग द S1. We can use the several slave like the we can use the here the S2 slave also and the some other slave. So इसको और इसको दोनों को हम we can control with the help of this master microprocessor or microcontroller. It is the structure of the SPI protocol. अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे दैट इज द मास्टर एंड इट इज द स्लेव. तो मास्टर जो हमारा होता है दैट इज द फोर थिंग्स वी हैव. फर्स्ट इज द MOSI, that is called the master output slave input. MOSI is the master output slave input line for the master to send data to the slave. ये वो लाइन होती है जिसमें मास्टर से स्लेव तक डाटा को सेंड किया जा रहा है, एज वी कैन सी हियर. नाउ सेकंड इज द मीसो, दैट इज द मास्टर इनपुट स्लेव आउटपुट. तो यहाँ पर हमारे पास मास्टर है वो तो हमारे पास इनपुट है और स्लेव इज द आउटपुट. तो डाटा को इस तरह से सेंड किया जा रहा है. लाइन फॉर स्लेव टू सेंड डाटा टू द मास्टर. देन SCL के क्लॉक, लाइन फॉर द क्लॉक सिग्नल, ये हमारी क्लॉक के लिए लाइन होती है. एंड SSCS इज द स्लेव सेलेक्ट और चिप सेलेक्ट, लाइन फॉर द मास्टर टू सेलेक्ट विच स्लेव टू सेंड डाटा टू, किस स्लेव पर हमको डाटा को भेजना है. फॉर दैट पर्पज वी यूज. तो हाउ द SPI वर्क्स, वी विल सी दैट व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल, किस तरह से हमारा ये SPI है वो वर्क करता है. फर्स्ट द क्लॉक. The clock signal synchronizes the output of data bit from the master to the sampling of the bit by the slave. आपस में सिंक्रोनाइजेशन होता है मास्टर का और स्लेव का थ्रू द क्लॉक. One bit of data is transferred in each clock cycle. So the speed of data transfer is determined by the frequency of the clock signal.
SPI communication is always initiated by the master, since the master configures and generates the clock signal. The clock signal in SPI can be modified using the properties of clock polarity and clock phase. इसको modified भी कर सकते हैं. These two properties work together to define when bits are output and when they are sampled. Clock polarity can be set by the master to allow for bits to be output and sampled on either the rising or falling edge of the clock cycle, while the clock phase can be set for output and sampling to occur on either the first stage or the second stage of the clock cycle, regardless of whether it is rising or falling. Slave select, how the we select the slave and what are the multiple, in what happen in case of the multiple slave. So we can see the master and slave configuration. Here we are using the multiple slave, we are using the slave number 1, slave number 2, and here is the slave 3. We are using the 3 slave, and these slaves are communicated with the single master. यहाँ पर ये हमारा master है, इससे ये हमारे पास connect हो रहे हैं. How we have done? First we have done the this connection from master to slave line, and then slave to master line. Then there is a clock, जो हमारे पास ये clock signal है. Then SS और CS, that is the chip select, कि हमको SS1 फर्स्ट डिवाइस को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर ये फर्स्ट डिवाइस को सेलेक्ट कर लिया. देन व्हाट हैपन, SS2 मीन्स कि हमने सेकंड डिवाइस को सेलेक्ट किया, SS3 के थ्रू हम थर्ड डिवाइस को सेलेक्ट कर रहे हैं. एंड रिमेनिंग पिन्स और ऑल्सो जो डाटा ट्रांसमिशन है मास्टर से स्लैब पर, वो यहाँ भी हमारा आ रहा है. स्लैब 3 और स्लैब 2 दोनों पर कम्युनिकेट हो रहा है. तो व्हाट आर द सम स्टेप्स ऑफ द एसपीआई डाटा ट्रांसमिशन की अगर हम स्टेप देखते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में द मास्टर आउटपुट द क्लॉक सिग्नल. तो मास्टर जो हमारा है वो क्लॉक को सबसे पहले स्लेव को आउटपुट भेजेगा इन द फॉर्म ऑफ द क्लॉक सिग्नल. सेकंड स्टेप इज द मास्टर switches the SSCS pin to a low voltage state which activate the slave. इसको ये SSCS पिन को हम लो वोल्टेज स्टेट में रखते हैं, जिससे कि हमारा जो स्लैब है वो एक्टिव हो जाते हैं. अब उनको कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी स्लैब को. द मास्टर सेंड द डाटा 1 bit एट ए टाइम टू द स्लैब अलोंग द MOSI लाइन. MOSI लाइन के थ्रू जो मास्टर है वो स्लैब पर 1 bit डाटा भेजते हैं. द स्लैब रीड द बिट एज दे आर रिसीव्ड. स्लैब उस बिट को रीड कर लेता है जो कि मास्टर से स्लैब के पास भेजी गई है. In the next, as shown here, the master, that is the clock signal, and it is the chip select signal, and it is the master to slave signal. After, if a response is needed, the slave return data 1 bit at a time to the master. अगर हमें ज़रूरत है तो यहाँ पर हम slave के थ्रू डाटा को रिटर्न कर सकते हैं along the meso line. The master read the bit as they are received. Master जैसे bit वो receive होती है उसको read करता है. It is the way of communication in the SPI protocol. Now what are some advantages? First, no start and stop bit is needed, so the data can be streamed continuously without the interruption. No complicated slave addressing system like the 12C, higher data transfer rate than 12C, twice as fast. Separate MISO and MOSI lines so data can be sent and received at the same time. These are the some advantages. What are the some disadvantages हमारे क्या हैं कि users uses 4 wire, 12C and UART use 2 wire, but here as we can see we are using the 4 wire system between the master and slave. Second drawback is the no acknowledgement that the data has been successfully received
जबकि 12C में इस तरह का एक्नॉलेजमेंट का सिस्टम होता है। नो फॉर्म ऑफ एरर चेकिंग लाइक द पैरिटी बिट इन यूएआरटी, ओनली इट अलाउज फॉर ए सिंगल ओनली अलाउज फॉर ए सिंगल मास्टर। यहाँ पर हमारा जो मास्टर है वो केवल हमारा एक ही हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारी जो एसपीआई जो प्रोटोकॉल है उसका किस तरह का तो स्ट्रक्चर होगा, कहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं, what are the some advantages and disadvantages of the SPI प्रोटोकॉल के क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं। थैंक्स।